Assalamu alaikum wa rahmatullah. In this short video, we'll be discussing two confusing terms. One is gross cropped area, written as GCA. Another one is net sown area, written as NSA. So, before I explain both terms, we'll write the definitions first. So the definition goes like, is the area sown. So first thing is clear, this is the area under cultivation, right? So is the area sown once or more than once. Either we are cultivating the area once or more than once in a particular year. Now up to this it's clear. Now the second statement is quite important. When the crop is sown on a piece of land twice, when the crop is sown on a piece of land twice, the area is counted twice. If the point here would be, when the crop is sown on a piece of land thrice, if it is thrice here, not twice, the area will be counted thrice. So the area is being counted here, the number of times you are cultivating the crop. You are cultivating the crop or you are cultivating the field, right? Okay. Now we'll compare the same definition with the net sown area. Now talking about the net sown area, so we'll see the definition first. So is the area sown, again this is area under cultivation. Is the area sown with crops but is counted only once. This is the main deciding factor, but is counted only once. That means if you are cultivating the same land number of times, it hardly matters, because we are counting the land only once. Okay, see the definition now here. Is the area sown with crops but is counted only once, even if you are cultivating the field number of times. So अब हम definition को इस तरह समझेंगे. If we talk about the GCA first, gross cropped area, so definition को इस तरह समझेंगे, concept को इस तरह समझेंगे. अगर हमारे पास एक piece of land है, for example this is the piece of land ABCD, under cultivation a farmer is there which used to cultivate this land. So वो क्या कर रहा है, वो इस field को cultivate कर रहा है, right? अब ना फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे 2021 में वो कल्टिवेशन कर रहा है इसमें. सो जितनी बार वो इससे फसल लेगा, हम उतनी बार लैंड को काउंट कर रहे हैं. वी काउंट द लैंड द नंबर ऑफ टाइम्स ही इज कल्टिवेटिंग द सेम फील्ड. फॉर एग्जाम्पल वो 2 बार इस फील्ड से फसल ले रहा है, इज कल्टिवेटिंग द लैंड 2 टाइम्स. हम लैंड को 2 टाइम्स काउंट करते हैं. वी काउंट द लैंड 2 टाइम्स. Now if he is cultivating the land 3 times in a year, in a particular year, हम इस land को count करते हैं 3 times. Likewise, if he is cultivating the same land 4 times, we count the land 4 times. हम as if consider करते हैं कि इसने 4 बार इसमें खेती की है, so we count the land 4 times. Right? For example, अगर ये land था 1 canal or 1 hectare, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लैंड था 1 हेक्टेयर, बट द फार्मर उसने क्या किया, उसने इसमें 4 बार कल्टिवेशन की है, 4 टाइम्स ही कल्टिवेट्स द सेम लैंड. सो इसका जो एरिया बनता है जब हम काउंट करते हैं, हम लेते हैं 4 हेक्टेयर्स. अगर इसने 3 बार कल्टिवेट किया होगा तो व्हाट वी आर राइटिंग इन इन काउंटिंग द लैंड 3 टाइम्स, 3 हेक्टेयर्स. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. Now we'll see what happens in the net sown area. Now again we have a piece of land A, B, C, D, but now the concept is different. This is net sown area. अगर यहाँ पे farmer एक बार cultivate करता है तो एक बार हम count करते हैं. We take the land 1 time, right? For example, if the same land is 1 hectare, so हम land को count करते हैं 1 hectare. अगर अब फार्मर यहाँ पे 2 बार इसको कल्टिवेट करता है, एक बार इसने कल्टिवेट किया 1 साल में, अब दूसरी बार भी कल्टिवेट करता है, अब तीसरी बार भी कल्टिवेट करता है, लैंड बनना चाहे ड्यूरिंग लाइक हमने देखा कि ग्रॉस क्रॉप एरिया में क्या होता है, हम 3 बार लेते हैं. बट हियर अगर फार्मर 3 बार भी 1 साल में कल्टिवेशन करता है, वी कंसिडर द लैंड ओनली 1 हेक्टेयर. वी कंसिडर द लैंड हियर ओनली 1 हेक्टेयर. अगर यही कंसेप्ट होता, यही प्रोसीजर होता है
ग्रॉस क्रॉप एरिया में, तो हम लेते हैं लैंड, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स द फार्मर इज कल्टिवेटिंग द लैंड. फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बनता 3 hectares. Now here in the net zone area, the same area becomes 1 hectare. This is, this is while counting the land, right? So अब हम देखते हैं इसका जो application है, we will go to that part. Now if we consider total area of India, that is 329 million hectares. Out of that, 195 million hectares is a gross cropped area, and 141 million hectares is in net sown area. Now there is some remaining portion which is net irrigated area, but we will be focusing here about on two. One is the gross cropped area, another is the net sown area. Now see what we are doing here. Now if we deduct net sown area, from gross cropped area, मैं क्या कह रहा हूँ, if we deduct net sown area from gross cropped area, we will find those cultivated areas, which are cultivated for more than once in a particular year. I hope you are getting my words. मैं ये कह रहा हूँ बेटा, if we deduct net sown area from gross crop area, we are getting that land portion which is being cultivated more than once in a year. So I hope gross cropped area and net sown area is quite clear to you. They are not two synonym terms, but they are two different concepts. Recap the video and it will be very clear to you. Thank you.